All right. So finally, we are live and we're excited for the session. So we have Push with us today, and he would be enlightening us with some of the things on technology. How do you collaborate with a PM? Okay. So, what are the basic understandings you need to have as a PM so that you can interact with your tech guy. Okay, so we'll wait for some times. I can see only four of us are live right now, so maybe I'm expecting more people to be joining. Okay, so just let me tell people. mm, all right, so all of you would come, and then we'll start very soon. Okay. Mm. Okay, Zubair. Good evening, sir. Acha, Zubair has this habit of saying good evening, sir. School like this. So, to all the people who are joining the session and are joining for the first time, so just to tell them that Cypher School has this program onto product management. So, they teach product management. They've recently launched about product management, and it's a very new course at Cypher School, and there is a batch that is already learning about product management, and it's already about to conclude. So this live is as a part of the tech thing in that. Okay, so there's this topic there in the whole program wherein it's about stakeholder management, that you as a PM, how do you interact with your dev team, what are the basic terms that you need to know so that you can interact with your tech team, so that you can have a common understanding between both of us. So that is the whole idea of the session, and we'll be starting in just 1 minute. So just tell all your friends and people, whoever wants to join the session, so they can come, they can join, get enlightened about the stakeholder management thing between the tech guy and the product guy. So Yatharth says background must hai sir. Still in office. Everyone has gone and I'm staying alone right now at office to just take this. And probably this is no, we'll keep doing it. Don't worry. So yeah, Yashi super excited. Yashi giving this smiley. All right. We have eight of us live, but I'm still wondering that on the StreamYard it's eight, but on YouTube it's four. I'm not sure from where the extra four people are joining. Anyways, just to tell you all, तो थोड़ा सा lag होगा, ठीक है? So whenever you have doubt or questions ना, so if you post anything on YouTube, so I will get to see that maybe in few seconds later. 15-20 seconds later, maybe 10 seconds, not sure about what the ratio is. So keep posting question. हो सकता है I'll not immediately see, but eventually I get to see, because again that is live stream चल रहा है, तो थोड़ा सा delay होगा. Okay, and I guess it's time to get started. Okay, so today we have Pushp with us, ठीक है, and he is one of the cool rock stars at Cypher School, who's also a developer, okay, who's also a software developer, and he has been taking a couple of sessions at Cypher School and also helping Cypher School teams in a lot of things. So I welcome Pushp in the session. So स्वागत है पुष्प. कैसे हैं आप? Can you hear me, Pushp? पुष्प आप म्यूट पे हैं. So if you can hear me. Basic internet issue, I guess. So currently, Pushp and me, we both are in Bangalore.
and it's been raining in Bangalore heavily. So you guys can understand kuch tech issues. Pushp, can you hear me? Just a second, I'll see what's wrong. ओके गाइस कुछ तो ग्लिच है ठीक है पुष्प कैन यू हियर मी Hello. या ऑलराइट पुष्प नाउ आई कैन Yeah, हियर yeah. यू सो कैसे हैं आप थोड़ा सा वर यू एबल टू हियर मी पुष्प जब मैं बातें कर रहा था तो It's lagging a bit. थोड़ा फंस के आ रहा है आवाज कट रही है थोड़ी. अभी क्लियर है कि नहीं हाँ अभी क्लियर है. ठीक है मैंने कुछ आपके स्वागत में लाइनें बोली थी बट अनफॉर्चुनेटली यू कुडंट हियर ठीक है सो मैं थोड़ा सा बेसिक फिर से रिपीट कर देता हूँ सो गाइज वी हैव पुष्प विद अस इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ही इज वन ऑफ द रॉक स्टार पीपल एट साइफर स्कूल हेल्पिंग साइफर स्कूल टीम्स गिविंग सेशन पता नहीं क्या क्या कर रहा है ठीक है ज्यादा इनसाइट के लिए आप पुष्प से यू गाइज कैन डायरेक्टली कनेक्ट हिम on LinkedIn, not sharing the number on live, ठीक है सो पुष्प स्वागत है आपका सेशन में ठीक है एंड और द माइक इज ऑन यू तो जस्ट टेल अस कि क्या क्या पढ़ाने वाले हैं आप अभी आज के सेशन में एक थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे So just will go through. सो बेसिकली मैं अगर शायद कुछ इंटरनेट इशू है सो बेसिक द आइडिया इज कि प्रोडक्ट मैनेजर देखो जो प्रोडक्ट मैनेजर का रोल है ना इट्स वेरी ब्रॉड डोमेन एक्चुअली ठीक है कुछ इंटरनेट इशू है पुष्प के एंड पे सो इट्स अ वेरी ब्रॉड डोमेन ठीक है एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हियर इज द स्टेक होल्डर मैनेजमेंट ठीक है कि यू हैव टू डील विथ मल्टीपल स्टेक होल्डर्स दो इट बी मार्केटिंग टीम डेव टीम some a lot of time sales team ठीक है so that is where you need to understand about tech as well ठीक है तो यहाँ पे that is what we are going to be discussing so push the mic is to you go ahead we cannot hear you push Hello, I'm audible.
All right, sorry. Pushp, can you hear me? Pushp? Yes, Oh, audible. really sorry. Actually, कुछ issue हो गया था. ठीक है. So sorry guys, all of you. ठीक है. इनफैक्ट अभी जब दोबारा बोल रहा था तो माइक ऑफ था एंड आई couldn't notice it. So yeah, पुष्प थोड़ा सा मैं लोगों को वो सेट कर देता हूँ कि व्हाट्स द एजेंडा ऑफ द डिस्कशन टुडे. ठीक है. सो एज आई सेड अर्लियर कि एज अ प्रोडक्ट मैनेजर यू हैव टू डील विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स. ठीक है. दो इट बी टेक, इट बी मार्केटिंग, इट बी सेल्स. ठीक है. और जब आपका सबसे इंटरेक्शन होता है सो यू नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ all the terms in tech. You need to have basic understanding of the terms in marketing, then only you will be able to communicate. ठीक है. सो आज का एजेंडा यही है कि क्योंकि पुष्प इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर. ठीक है. सो ही वुड बी शेयरिंग दैट व्हाट आर दोज बेसिक टर्म्स दैट one needs to understand so that he's able to have a better communication with his tech team. So Pushp, as we know that आप थोड़ा सा slide and all you've prepared so that you can take us step by step through the entire thing. So yeah, Pushp, go ahead and would love to hear from you. Yeah, sure. Just start with sharing the slide, then we'll just take you through what we have prepared and what we have planned to Mhm. discuss on this session. Sure, sure. So yeah, I can see this comment from Afzal. He's excited. Okay. Yeah. So just let's start. All the session. This session is basically about what if you're in a product management, so what all techs or the concepts, like all the jargons that we generally the developers use, so you guys must be aware of, so that you can also relate. Otherwise there will be some mismatch or the communication gap. So we'll just go through in today, like what all the concepts, technologies, like you should be aware of, or you need to keep yourself updated with the trends. So so just the title is decoding tech, like how we can. And the one of the basic question is like, since we are from the product management, so like how much tech we should know and how much tech is really important for us. Because if you see in a tech, so tech is very vast, like lot of things come under tech. So it is really very confusing, like how much tech is really important for us to know. So the most basic thing is like, you should know like what the developers is trying to communicate you, and you should be able to communicate between the business requirement and the development needs. So you will be basically the let's say the bridge between the developers and the business requirements. So you have to really knowing about the technologies, like what the developers are doing, how they are doing, and how you gonna describe to those, to the business unit, to the marketing department, so that they will interrelate to the things. Yes. Makes So sense. Like that is yeah. what a product manager does. Ki business requirement hai, he'll just come, he'll compile it and share it with dev team ki ये हमारी requirement है and you just prepare this. And then also before preparing actually वो तो final stage हो जाता है. Also discussing कि इसको implement करने में क्या challenges होंगे, is it possible or not, और वो सारी चीजें समझना हर एक details को. So next step to the basics, like what are the basics tech concepts or the terms that one should be aware of. So the basic, let's say if we'll take example of a website. So what all website is comprises of, like let's say the front end, back end, we use database, like we use servers to host our websites. And if we'll go more into the deep, so there are many APIs on which the websites are running, networking. So we'll just go through to each the concepts. These are not the only concept, I'll say. There are many more concepts like cloud computing,
or many things. So I'll just go through, make you describe like what is front end. So in, if I'll say the front end in the basic terms, like whatever we see in the front, like say we open a website and we are saying an interface, like there are buttons, there are different sections, there are menus. So all these things come under the front end. But let's say we go to the cypherschools.com and we'll see a resume builder. Now we, now that's the front end. And when we go to the resume builder, what we do, we just, there's a forms pops up and we just keeps entering the details like name, what's the last name, what are our qualifications, what all certifications we have done. And what you see on the other side, there's a full fledged resume which is getting built up. How it is getting built up? It's all because of the algorithms or the logics which is implemented at the back end, which is not visible to you. But what is visible to you, it just, you're just typing it and it is just getting formed on the other side. And databases, database, from the name itself, it is, you know, very clear, like it is all about data. So in today's world, if we'll say, you must have heard like data is the new money. So obviously data is very important. Like whatever we see on a website or everything is all about data. If we don't have data, we have nothing, we can say now. So database basically is a collection of all the data, right? So let's say we have a table, or if we get an example, like all in a college, what happens, there's some management system, right? Student management system. What they keep, okay, so this is the batch, let's say 2029 batch, what all other courses, how many students are enrolled, how many sections are there, like which subject is taught by which professors. So all these are the data, right? In earlier days, what we used to do, we used to maintain a notebook, we used to just draw a table or just make a chart of it. And then as the time proceed, no, just the new things came up, we started using Excel, right? So Excel is also easy to use, but is it really that reliable, you can say? Or we cannot use Excel everywhere, we cannot use Excel for everything on our website to fetch the data, is it not that convenient? So for that, it is a database that is used to fetch the data on a website. It's a collection of the data that is being stored. And whenever we press a button or we call an API, what a website does, it just fetch goes to the database, so database server. It tells, okay, so this is the thing I want, this is the data I require. And what you have to do, they just give you the data and it shows you on the front end. So here comes the API. Now what is API? So API, if I'll make you in a very simple सॉरी terms, पुष्प yeah. डेटाबेस के एक दो कोई एग्जांपल देंगे व्हाट आर दी पॉसिबल डेटाबेस जो मार्केट में यूज हो हाँ. रहे हैं So हम्म database, abhi will see, so SQL, MySQL, Post. So ये database, MongoDB is also a database that we use. तो there are different databases, और ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक ही डेटाबेस यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजीज, टेक स्टैक्स, किस, अगर हम लोग फ्रंट एंड या बैक एंड में जो भी टेक यूज कर रहे हैं, उसके कंपैटिबल में कौन सा डेटाबेस इज मोर कन्वीनियंट एंड मोर विल बी ईज टू यूज, उस बेसिस पे हम लोग अपना एक डेटाबेस चूज करके उस वो डेटाबेस यूज करते हैं. आजकल हम लोग मर्न आज के ट्रेंड में अगर हम देखें इंडस्ट्री में, काफ़ी ट्रेंडिंग पे है. हर चीज़ मर्न यूज़ करते हैं लोग. पहले जावा पे यूज़ करते थे स्प्रिंग बूट, which is very heavy, but now we have shifted to the MERN. So in MERN we generally use MongoDB. So अभी के टाइम पे टू, what I have used in my journey till now, like MongoDB and MySQL is the most popular at this point of time, I can say that. And got it yeah and okay, so going to the server API. Okay, so we were on the API. So what is API basically?
I'll make you say in a very layman term and very simple example. API just like a waiter. Like we go to a restaurant, what you do, you just see the menu. Okay, you want to eat this, this. You just call a waiter. What you do, you just tell him, okay, I want a paneer or whatever the things. I want veg thali or whatever from the menu you choose. And what he does, he just go Don't to the talk about veg thali. I'm already hungry. Staying late at office. okay, so you can have pasta then, like anything from the menu. So it was just like, okay, That's rude of you. okay, so just it's the waiter is just a simple thing. It just takes your order and delivers to the kitchen, right? So now it's all the responsibility of the cook to prepare that order. And again, what the waiter will do, he will fetch, take that cooked food and deliver to your table. So the working of API is also same, the simple. What it takes, it just takes the order from a client or a customer, you can say. It goes to the server and request like, okay, I am being requested for this service, I want this data or this thing. The servers respond to the output, and then again the APIs brings back the data to the user and shows it. That's the simple thing that API do, the simple working of the API. Just to take your input, goes to the server and asks for the output, and again bring back the output to you. This example was really like awesome. Now I'm not going to forget, not just the waiter thing, because it was also a topic discussed when I was hungry. So now I'm not going to forget the definition of API. Definitely will be, it will be recalled like all the food whenever you will be hungry. Yeah. Yeah, Yes. yeah. So now if we'll move to the concepts, like just to describe and sum up everything in together, let's take a breakdown of a website, like how a website is build. Like it's not only the HTML, CSS or the thing, there are many more things like which are included in a website like when we build. So let's see a simple example. I'll talk about the three, with the three basic things, like the front end, back end, and the database, because these three are the crucial things. Front end, as I already told you, like is the, you can say, the user interface, like all the interface that you see whenever you go to a website or whatever it is visible. So it comprises of front end. Now there are various technologies which are used for front end. The simple technology is HTML, CSS, and JavaScript, but many different things is being used like Angular, React. These are also used for front end development, Bootstrap, all the things design, like in whatever way you can make a website look very good. It's all about front end. Back end comprises of all the logics, like how a website will perform, like what, like whenever you click let's say a button, or you call a API, or you click on a section, like then what will function or what will show it to you. So it's all the logic comprises from the backend. If I'll give you a simple example, let me show you. Okay, okay, let's see. If we go to Cypher Schools, right? So what is this? This is the front end that we are seeing right now, like every section, like all the buttons and everything. Now let's say we go to courses, right? And these are all the courses, but
let's say we click on one of the courses. Let's say the first course we click on. Oh, sorry, this is Python. Yeah, complete Python. So introduction to Python courses. So what you'll see, the interface, right? So what are the interface comprises of? Is the video player, is written the title, right? The lecture, the course name, what is the lecture, title of the lecture. If you'll see, go down, it's like follow button, the like button, share button, draw now, or the list of all the lectures, right? So this is for the first course. And if let's say we open another course, Java, you will see this is the same user interface, but the data which is being shown is different depending upon the course that we are trying to fetch. So what does database do? So whenever we are click on a browser or let's say a course, so it is calling an API. And what does this API is doing? API is going to the database server and it is fetching like, okay, I have requested for the competitive programming crash course. So, what is the course title? What is the uh, lecture name? What is the first lecture? So it is just being shown. It's not like if there is 100 course, so 100 separate pages is being built, right? Only one page is being built, but the data which is shown is different, right? So that's what the database do. And let's move to the key technologies, like what technologies you should just a second, right? If we'll go to key technologies, right? So as we talked about technology, so in technology it's a very vast thing, but a product manager has to look for the very different things, like that person has to go through the user experience, has to manage all the business requirements, like how a business requirement uh, like uh, for an example, let's say I'm a client, okay, and I go to a company and I'm having a meeting with, let's say, a product manager. Like we are just discussing about what all things I require in my business, what all things I need. I will be describing, but I won't be describing, okay, this is a technology that I want, this is a feature that I want. I will be just wanting, okay, this is my requirement, my business required this, and how you gonna provide me the result, how you're gonna provide me the product which will fulfill my need. Now what project manager can do? Project manager can go to the developer team. He will now or she will now like translate in a sense, like not make the developers team understand, like, okay, we have got a business and our client need this feature. He want, let's say, build a website. It's about an e-commerce website. He want a payment gateway. So what can be the best thing that we can deliver, like what all the features, so everything. And he also need to keep tracks, like, okay, it should be the user centric user, it should retain user. It's not like, okay, user is not able to find any section. So there are very different things that one need to keep in mind. So there's just a few technologies. Version control. So what is version control? You must have seen, like, if you're downloaded any app, so after some times it says, okay, there's a new update, just update an app for the some new feature, or just, so version control, let's say you have built a something, right? And you named it as version 1, but you're again rolling some, new features, or let's say a bug, or in the meantime you're working on new features. So right, so you cannot push everything that you are coding or that you are developing on the master product, right? Because you will lose the track. Okay, this was your main dip, because you cannot push
each and every line of code at that moment in the production. So the version controls is very crucial, and PM tools like they are very tools. Okay, so Jira, Notion, or So Sanskar is Trello. actually asking how much of tech one should know as a PM. So, Okay. uh, yeah, what's your thought on this? Like, what based on your interaction with your product manager? It's just what can say, mm, whatever. Let's say I'm a developer, okay, and he made me understand what the business requirement is. Now it will be my call and my understanding and my knowledge that will tell him, okay, these are all the things that we have to build. And the basic thing is whatever I'm saying, what are the jargons, let's say API, backend, all the pipelines, like okay, we have to host that's in a server. So he should be aware, okay, this person is talking about this. It's not like there will be a communication gap. Let's say I'm talking about a cloud. Let's say we need to host in a cloud. So he should not understand about the cloud in the sky, right? So this is a complete different thing. So just like whatever we are speaking, he should know, okay, what I'm speaking and what I really mean. There should not be any communication gap or misunderstanding. Yes, the basic jargon actually कि Exactly. जो basic terms use किए जा रहे हैं ठीक है. And also one thing I would suggest everyone, and it happens with me also a lot of time कि there are some terms and new things, new technology that I don't know, maybe I'm not aware of as a PM. I simply connect with my tech guys and I tell them to, okay, what is this? Please help me in understand. Okay, so a lot of time even I come across few things that I don't know, but it's simply best to ask rather than Exactly. assuming something of your own. Exactly. Mhm. And it's even tech is very vast, and we know like tech is on a continuous development. आज हमने कुछ सीखा, कल कुछ और नया आ जाता है. तो Hmm. आज अगर हम Uh, ये सोच लें कि हमने इतना कर लिया, अब हमें आगे कुछ नहीं करना, हमें हमें टेक आ गया है, बेसिक्स, तो आने वाले कुछ टाइम के बाद विल बैक आउट, हम लोग पीछे आ जाएंगे, बिकॉज इट इज़ अ कंटिन्यूअस लर्निंग थिंग. हमें करंट अपडेट्स के साथ अपडेटेड रहना पड़ेगा. जो भी टेक के चीज़ आ रहे हैं या फिर कुछ भी हो, हमें अपडेटेड रहना hmm. पड़ेगा टू बी इन द फील्ड. Yes. Same thing, यथार्थ का ये क्वेश्चन जो था आंसर हो गया कि what if the scenario comes where we don't know about that specific tech? Simply connect as a PM. So you simply talk to your tech guy, जो भी free है, tech lead या जो भी, ask them to just help you in understanding that. Okay, and then we are getting this very important question is Sanskar, is it possible to implement feature as a possible to a product? Is it possible to implement feature as me as possible to a product? संस्कार थोड़ा सा क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है. डू यू मीन टू से कि इफ आई एम अ प्रोडक्ट गाय एंड आई टू अ लेवल आई नो कोडिंग सो आई कैन गो ahead and code it? Is it what you are trying to say? If it is so, assuming ki if I am a PM, so let's say ki जैसे push, just to tell you that even I had a development background, ठीक है? So Yeah. after my development background, I switched to product management, ठीक है? Development background was very low, like close to 1.5 years. Now इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि व्हाट आई हैव सीन इज कि जब डेवलपर्स प्रोडक्ट मैनेजर्स बनते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है. और वो प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से आप डेवलपर हो ठीक है एंड यू आर डूइंग अमेजिंगली वेरी गुड. ठीक है कि आप एज अ डेवलपर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, यू आर डूइंग गुड, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, अवार्ड्स दिए जा रहे हैं. बट आगे चल के क्या हुआ कि आपका प्रमोशन हो गया ठीक है, क्योंकि एक दो साल बाद तो कंपनी को आपको ग्रोथ दिखानी है. नाउ दे हैव Yeah. मेड यू लीड या फिर मैनेजर. ठीक है, अब आपकी जगह कोई दूसरा डेवलपर आया ठीक है एंड ही स्टक विथ समथिंग. ठीक है, स्टक विथ समथिंग, उसको समझ में नहीं आ रहा है, सब फट रहा है ये वो, एंड यू वांट टू बी अ हीरो कि यार मैं बताता हूँ, लाओ सब लोग छोड़ो मैं करके दिखाता हूँ. ठीक है, एंड यू आर नाउ मैनेजर बट यू एंड अप सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम कि चलो मैं लाके कोड कर दूंगा, मैं 2 दिन लगेगा सॉल्व कर देता हूँ. बट इफ आई एम डूइंग सो, that means that I'm not a good manager. ठीक है, आई Yeah. एम नॉट अ गुड मैनेजर इफ आई एम डूइंग सो, बिकॉज आई माइट बी अ गुड इंजीनियर, तो मेरे प्रमोशन का कोई यूज नहीं हुआ उस केस में. Mm-hmm. सो जो संस्कार ने बोला ना कि इज इट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट फीचर एज मी एज टू अ प्रोडक्ट, ठीक है.
सो आंसर यही है कि यू एज अ प्रोडक्ट मैनेजर आर एक्सपेक्टेड टू manage the product and manage not do product. development even if you know development. Exactly. Exactly. You should So know how to make, let them yeah, make the like things, not instant that yes. is you just jumping into the thing and start doing it and just finish it. ठीक है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मीम्स बहुत सारे शेयर होते हैं कि जैसे मैंने बहुत देखा था कि आर यू टू गाइस फ्रेंड, और प्रोडक्ट मैनेजर कहता है यस, टेक कहता है ये कब हुआ। तो आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है कि प्रोडक्ट से आपके जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट, ये वो, तो वो कितना फ्रीक्वेंट है या क्या होता है या आपके केस में नहीं होता? ठीक है, मे बी कई कई कंपनीज में प्रोडक्ट ओनर्स डायरेक्ट डील करते हैं, नॉट द प्रोडक्ट मैनेजर। तो आपका क्या वो है एक्सपीरियंस मतलब, इन दिस I, टर्म? I agree actually because we as a developer we are just developing. हमें नहीं पता कि मार्केट में और द यूजर विच आर कंज्यूमिंग उनकी फीडबैक्स क्या है. व्हाट इज द प्रोडक्ट मैनेजर और द मार्केटिंग टीम, इनकी जो टीम होती है ये है, दे आर नो मोर इनटू दी ओके मेकिंग दिस थिंग एज अ बिजनेस फिट. यूजर्स के फीडबैक्स लेके ओके क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या फीचर होने चाहिए. सो दे नो मोर अबाउट द प्रोडक्ट देन वी डू. वी आर जस्ट मेकिंग द प्रोडक्ट. We know just how this product can work and how to make a thing, like how to make this a software or whatever we are coding as a product. देखिए हमने बना के दे दिया, बट द मोर एल्स से उन्हें ज़्यादा पता होता है कि ओके दिस कस्टमर सेंट्रिक क्या है, एनालिटिक्स क्या है, अभी मार्केट ट्रेंड्स क्या है, दे आर मोर अपडेटेड. तो ये तो एग्री करूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स तो होते ही हैं. कभी वो लोग कुछ बोलेंगे, हमें लगता है यार ओके इसकी रिक्वायरमेंट तो होनी नहीं चाहिए, but actually we are not on the ground and seeing at the ground level. एग्जैक्टली, लाइक विथ मी इट ऑफन हैपेंस कि बहुत सारी बार ऐसे होता है कि रियल टाइम में कुछ और होता है, बट एक्चुअली कस्टमर्स को चाहिए कि जितना इजी से इजी चीज आप बना दो, ठीक है। दे डोंट वांट टू गेट इनटू कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एंड जो डेवलपर्स के साथ जो प्रॉब्लम होती है, बिकॉज दे आर ऑलवेज सोल्यूशन ओरिएंटेड, ठीक है। जैसा मैं सेशन में भी बताता हूँ, ठीक है, कि प्रोडक्ट मैनेजर और बाकी लोगों में फर्क क्या होता है कि एक बहुत ही फेमस केस स्टडी है कि एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है 50 लोगों को, ठीक है। और उस 50 लोगों को सबको अलग अलग रूम में डाल दिया जाता है सॉल्व करने के लिए। उस 50 लोगों में से 25 वर फ्रॉम मैनेजमेंट बैकग्राउंड एंड 25 वर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, ठीक है। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले थे, प्रॉब्लम दिया गया, सॉल्व करके ले आए, ठीक है। अब सुनने में लगेगा तो ये तो अच्छी बात है, सॉल्व कर दिया। बट जो एनालिसिस किया गया कि जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से थे 25 लोग, उनके सोल्यूशन में कॉमन पैटर्न देखा गया। दे स्पेंड मोर टाइम इन अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि नहीं, इज इट एक्चुअली अ प्रॉब्लम और नॉट। जैसे मैं एग्जांपल Exactly. देता हूँ सेशन में कि एक डिवाइस है स्मॉल्ट, ठीक है, वो उसमें मूड लाइट है, बहुत इकोनॉमिक डिजाइन है, अच्छा सा लगता है, लुक उसका बहुत अच्छा है, एंड डाइनिंग टेबल के लिए बनाया गया, एंड होल पर्पस इज टू डिस्पेंस सॉल्ट, खाने में नमक कम है तो इट्स अ स्मार्ट सॉल्ट डिस्पेंसर, की जैसे गूगल होम को बोलते हो ना कि हे प्ले सम म्यूजिक, तो उसको बोलो कि डिस्पेंस सम सॉल्ट, तो ट्रे खुलेगा और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट आएगा एंड यू कैन पोर इट इन योर फूड। वो 10,000 का आता है, ठीक है। तो व्हेन आई आस्क पीपल वुड यू बाय इट, तो सब कहते हैं नो, ठीक है। तो दैट इज लाइक प्रोडक्ट फाइंडिंग प्रॉब्लम, Hmm. ठीक है। कि जब प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए प्रोडक्ट बनाते हो, बट यहाँ पे Hmm. प्रोडक्ट इटसेल्फ इज फाइंडिंग अ प्रॉब्लम। Problem. कि जब इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है कि यू जस्ट एंड अप डिलीवरिंग द सोल्यूशन विदाउट हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग कि डू योर कस्टमर्स, योर यूजर्स वांट इट और नॉट। Exactly. Just they just focus on solving it, not really that we really need it or not. Like how many यस, people even will consume it. We don't even think like that. तो वही कॉम्बिनेशन होता है कि प्रोडक्ट गाइज आर मे बी समबडी हु अंडरस्टैंड्स देयर पेन पॉइंट, और उसको फ्रेम करके डेवलपर से उसको लाइव ले आना उस चीज को कि ठीक है, दिस इज व्हाट द अंडर सर्व नीड फॉर माय यूजर, फॉर द कस्टमर इज, एंड आई वांट यू टू डेवलप समथिंग लाइक दिस। एंड जितने Yeah. अच्छे आप पीएम हो, जितने अच्छे से आप अपने डेव, जितने अच्छे से कस्टमर को समझे और जितने अच्छे से डेव टीम को आप ट्रांसफर कर पाए, Hmm. उतने अच्छे Exactly. से
the whole product comes out. Yeah, exactly. सो सो कॉन्फ्लिक्ट आपका बताए नहीं आपने कभी हुआ ऐसे प्रोडक्ट टीम से? कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं लाइक जनरली, तो मतलब इतना डिस्कशन नहीं होता है जस्ट फॉर द टीम लीड। लाइक जो भी टीम लीड होते हैं, प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स, वो सिंपली हमें टास्क देते हैं, जस्ट वी हैव टू डिलीवर इट बिकॉज वी डोंट हैव एनी चॉइस। वी कैन नॉट रेज एनी कंसर्न लाइक ओके ये नहीं हो सकता, बट बैक ऑफ द माइंड हमारे में चलता है कि मतलब यूज क्या है इस चीज़ का, ये करना भी क्यों है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते ही रहते हैं ये सारी चीज़ें। मेरी आवाज आ रही है ना ऑडियंस को सबको? मुझे संस्कार बोल रहे हैं कि ऑडियो में प्रॉब्लम है। जस्ट मैं एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ। हम्म, तो बेटर है ऑडियो। मेरी ऑडियो आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है सही से। ठीक है। ठीक है, तो ऑडियंस में किसी का कुछ क्वेश्चन या डाउट, किसी को कुछ पूछना है तो यू गाइस कैन कीप पोस्टिंग इट। ठीक है, पुष्प विल ट्राई टू आंसर इट। इंटरेस्टिंग नॉलेज कोई है जो ज्वाइन किया है हमारे यूट्यूब पे? ठीक है। ठीक है, तो एनीवन इफ एनी क्वेश्चन, अफजल, जुबैर, यथार्थ, आपके कुछ डाउट हो तो यू गाइस कैन फील फ्री टू आस्क दोस क्वेश्चंस। ठीक है। सबसे पहले एक और चीज़ कर लेते हैं, लाइक बहुत ही हम्म। लोगों का एक बेसिक ये होता है, लाइक व्हाई इज टेक रियली इंपॉर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर्स। अब प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉरी, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लाइक टेक क्या नीड है, मतलब क्यों टेक हमें आना चाहिए। तो बेसिक मुझे ये लगा कि लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन विथ टेक्निकल teams. The reason I'll say, like project managers like often work very closely with engineers, designers, or any technical team members, and if they will understand the technical concepts, like that will allow them to communicate more effectively, and it will ensure that the requirement are really very clearly understood, and that any issue can be discussed or रिजॉल्व वेरी इफिशिएंटली। ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ बता रहा हूँ और कुछ नहीं समझ रहा है, राइट। तो वन ऑफ द बेसिक बेनिफिट आई विल से, लाइक डेवलपमेंट का प्रोसेस इंक्रीज कर सकता है, कोलैबोरेशन, इट विल इम्प्रूव द कोलैबोरेशन, एंड इट विल आल्सो रिड्यूस द मिसअंडरस्टैंडिंग दैट, जो कि बेसिक हम सोच सकते हैं कि ये हमारे टीम का नहीं है, लेट्स, क्योंकि डोमेन स्विच हो जाते हैं तो बड़ा ही बेसिक ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग हम कैसे समझाएं किसी को जो कि हमारे डोमेन का नहीं है, राइट। एंड लाइक इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग से आई मीन, इफ अ if they will have some knowledge about technology, right, and so they can make very informed decisions about product features, like क्या architecture हो सकता है, क्या tools we will be going to use, right, like हमें किस features को पहले प्रायोरिटाइज करना चाहिए, क्या रिसोर्स एलोकेट करना है, और रिस्क मैनेजमेंट में भी हमें इस चीज़ से क्योंकि लेट्स से बिकॉज वी स्टार्ट डेवलपिंग अ प्रोडक्ट, and if a project manager or project management, he or she has a knowledge about technology, so that person can really figure out like what can be the limitations और क्या क्या रिस्क आ सकते हैं हमें आगे जाके, if so it can also reduce the delays, like टेक्निकल फेलियर्स नहीं हो सकते, होने में हमें मदद मिलेगी, लाइक ऐसा ना हो कि हम कुछ डेवलप कर रहे हैं और फिर वो पूरा ही पूरा हमारा प्रोडक्ट फट गया है, राइट। एंड उससे एडवांटेजेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, लाइक इन अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट, बिकॉज ये हमारा मार्केट जो है सिर्फ टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है, सो इफ अ प्रोडक्ट मैनेजर विद टेक्निकल नॉलेज कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजीज, क्योंकि हम खुद जो बना रहे हैं तो बना रहे हैं, बट हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनके भी प्रोडक्ट और वो क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए,
So this can really help in this differentiating our product and staying ahead from all those competitors in the market. So it will really help us. So there are various things because of which think like project managers should be aware of few tech terms and the technologies in the market, because they are really interacting very deeply with the market, because they are more market centric, and we developer are just in the development shield, that I can say. पुष्प, एक क्वेश्चन और था कि ये बेसिक स्प्रिंट क्या होते हैं, अगर आप ऑडियंस को बता दीजिए स्प्रिंट साइकिल क्या होती है, एक स्प्रिंट कितने दिन का होता है, ये बेसिक चीजें थोड़ा सा अगर शेयर करें तो। सो इफ विल गो स्प्रिंट साइकिल्स बेसिकली हमारे वीक्स में होते हैं, लाइक 2-3 वीक्स, थ्री सॉरी लाइक 3-4 वीक्स के एक स्प्रिंट साइकिल्स चलते हैं। और एक स्लाइड्स में जैसे मैंने ऐड किया था, लेट मी शो यू, like agile and scrum methodologies, right? So agile हमारा एक methodology है in which what we do, we just break down a product into small chunks, and we work on a one feature and we release it, and then we work on a different feature and then we release it. And स्क्रम बेसिकली हम बोल सकते हैं कि एक फ्रेमवर्क है एजाइल मेथोडोलॉजीज का। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज। इनको लगा ग्लिच कुछ अटक रहा था। सो या तो स्क्रम पे थे, लाइक स्क्रम जैसे एजाइल है ना, तो स्क्रम भी बेसिकली एक फ्रेमवर्क है विद इन एन एजाइल। एंड agile sorry scrum में basically it revolves around very different things, like it defines roles, events कराते हैं, sprints होते हैं हमारे, and basically एक structured rule होता है work interaction within small, हम लोग छोटे से टीम में, like key components will say usually one say 4 week का long एक टाइम बाउंडेशन लेके हम लोग चलते हैं, डेली स्टैंड अप्स मीटिंग्स होते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं, रिव्यूज होते हैं, लाइक व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट, हाउ मच वी हैव डन। सो बस ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास दो ही है, बहुत सारे अलग मेथोडोलॉजीज भी होते हैं जो कि वी गो थ्रू एंड वी यूज। क्वेश्चन लाइक seeing some questions coming up from our audiences, like sir डीएसए लॉजिक बिल्ड करने के लिए कैसे स्टडी करें? अच्छा, फॉर डीएसए इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग, एंड डीएसए के लिए जस्ट पिक वन ऑफ द टॉपिक, वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी जिसमें भी यू आर मोर कॉन्फिडेंट, सी, पाइथन, जावा, जस्ट प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता। डीएसए ऐसा सब्जेक्ट है, कोडिंग ऐसा सब्जेक्ट है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर और लॉजिक बिल्ड होगा। दैट्स व्हाई वी से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और फ्लुएंट होंगे। ठीक है पुष्प, एक क्वेश्चन मेरा था, वाई, मतलब मैं खुद ऐसा किया हूँ बट यू माइट बी सीइंग योर फ्रेंड्स, व्हाई अ लॉट ऑफ डेव गाइज आर गेटिंग इनटू प्रोडक्ट मैनेजमेंट? इसका आंसर है क्या आपके पास? वाई? A lot of dev guys are getting into product. जैसे क्योंकि अभी तक तो मैं क्योंकि डेवलपमेंट कर रहा हूँ, तो मुझे डेवलपमेंट में लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है।
मुझे अभी तक मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं है कि मैं शिफ्ट करूँ इस चीज़ से। बट व्हाट आई कैन से इज़ कि एक टाइम के बाद थोड़ा सैचुरेशन आ जाता है हर चीज़ में। एंड डेवलपमेंट में ऐसा कोई नहीं सोच सकता कि आज से 2 साल बाद, 3 साल, 4 साल सिर्फ़ वो बैठ के कोड ही करता रहे। जो A bit मुझे of लगता है people कि want stability या in स्केलेबिलिटी चाहिए, बेसिक थोड़ा अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि अगर मैं कुछ डेवलप कर रहा हूँ, larger तो larger section of the business कि फॉर द जो हम लार्जर कर रहे हैं सेक्शन ऑफ डेवलपमेंट उसका बिज़नेस। इम्पैक्ट क्या है। हाँ, इम्पैक्ट क्या हम्म। है, हाउ कस्टमर्स और द यूज़र्स आर टेकिंग इट एज़, क्योंकि डेवलपमेंट में तो ये सब का एक्सपोज़र मिल ही नहीं पाता। तो एक टाइम के बाद मुझे लगता है कि संस्कार का ये क्वेश्चन है, हाउ टू स्टे अपडेटेड इन टेक और हाउ टू बी aware of new technologies, any resources, रिसोर्सेज़ फॉर टेक में अपडेट्स, इट इज़ फॉर मी इट इज़ लाइक कम्युनिटीज़। बहुत डायनेमिक होता है। बहुत डायनेमिक होता है, तो हम्म, आई विल से कम्युनिटीज़, जितने भी मैं टेक तो कम्युनिटीज़ होते हैं। हाँ, मैं तो बोलिए, बोलिए। मतलब मुझे जो पीएम नॉलेज के लिए चाहिए होता है, आई जस्ट आस्क माय टेक गाइस, कभी कनेक्ट होता हूँ, भाई बता दो क्या हुँ, चल रहा है, कीप शेयरिंग मी लिंक अगर आपको कहीं पे कुछ अच्छा दिखे तो। सो दैट हुँ, इज हाउ आई गेट टू नो अबाउट इट। एग्ज़ैक्टली, क्योंकि टेक इतना वास्ट है कि कुछ ना कुछ होते रहता है रोज़, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक। सर लॉजिक बिल्डिंग के लिए क्या करें? लॉजिक बिल्डिंग इट्स प्रैक्टिस, डीएसए, लॉजिक डीएसए से ही आता है, जो मैं अभी तक आज जो यूज़ कर रहा हूँ हर चीज़, क्योंकि डीएसए एक ऐसा थिंग है जो कि आई विल से कि वो पूरा ब्रेन ऐसा वॉश करता है ना कि यू विल जस्ट स्टार्ट थिंकिंग कि वो लॉजिक किस चीज़ को कैसे हम लोग डेवलप करें, कैसे बनाएँ, लॉजिक क्या होना चाहिए उस चीज़ का, इफ यू वांट टू डू दिस, बिकॉज़ डीएसए में इतने सारे चीज़ है ना, स्ट्रक्चर्स, लाइक जो भी बेसिकली हम लोग डीएसए में एल से डेटाबेस के साथ ही खेलते हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए हर चीज़ का। तो कुछ भी करोगे प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस से तो कुछ नहीं होगा। लॉजिक भी एक स्पेसिफिक लॉजिक, अगर आई एम सेंसिंग एज अ कोडिंग लॉजिक, बिकॉज इन अ लॉजिक तो ऐसे वेरी वास्ट ये हो जाता है किस चीज़ का लॉजिक के बारे, लाइक यू आर स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर, आई जस्ट से प्रैक्टिस कोडिंग एंड जस्ट डीएसए। ओके, सो वी हैव दिस क्वेश्चन, और सर डेटा एनालिटिक्स के लिए रोड मैप और क्या क्या सीखना पड़ेगा? डेटा एनालिटिक्स, फॉर डेटा एनालिसिस पाइथन इज वेरी मस्ट। डेटा एसक्यूएल वगैरह एनालिसिस भी एसक्यूएल, हाँ जानना है। एसक्यूएल पढ़ना पड़ेगा। एंड काफ़ी टूल्स हैं उसके, पावर बीआई, और भी काफ़ी टूल्स होते हैं जिसके, गूगल का भी आता है, लुकर स्टूडियो हाँ होता गूगल है। का भी आता है, लूकर स्टूडियो। एंड ठीक है, हाउ मच डेप्थ ऑफ कोडिंग शुड वी नो फॉर पीएम? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट शाश्वत, इसका आंसर मैं दूं अगर, तो यू सी, अगेन व्हेन यू से ऑफ द स्किल्स, ठीक है, तो आप जितना जानो उतना अच्छा है, ठीक है, द मोर यू नो द बेटर इट इज। बट इवन इफ यू डोंट हैव अ कमांड ऑन कोडिंग, it is not very important. Like as a PM, you can still collaborate with a tech team without knowing actually how to code, okay? जब तक आप बेसिक जार्गन और बेसिक टर्म से रूबरू हैं, यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर रिक्वायरमेंट विद द टेक टीम। सो यू मे नॉट नो to code, that's absolutely fine, ठीक है। These days I also see a lot of people from sales background getting into product management, people from psychology getting into product management. Now why psychology? Because they understand behavior well, okay, so that is where they are easily able to catch their customers and users, ठीक है। So across domains, people are getting into product management. It's mostly developers going into product management, but ऐसा नहीं है कि बाकी लोग नहीं जा रहे हैं, ठीक है? And just to tell you, Push, on my experience, the best, क्योंकि user का अगर आपको समझना है तो the best people to गेट द रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट इट्स यूजर, ओके, बट आप हर बार यूजर से जाके नहीं इंटरेक्ट कर सकते हो। तो उसके बाद आई फील द बेस्ट पीपल टू गिव यू फीडबैक एंड एवरीथिंग इज द सेल्स गाय एंड द कस्टमर सपोर्ट टीम। आप या, उनके साथ बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, आपको कस्टमर की सारी पेन पॉइंट पता चल जाएगी, क्योंकि वो लोग सुन रहे होते हैं, ठीक है, उनके पास दिन में 10 क्वेरी आती हैं, ठीक है। एग्जैक्टली। So, जैसे मैं यूजुअली कस्टमर सपोर्ट टीम के पास में ही बैठता हूँ, सो आई कीप लिसनिंग देम
अच्छा, बार बार पेमेंट फेलियर्स हो रहे हैं, सो आई जस्ट आस्क माय डेव टीम कि क्या हो गया, पेमेंट फेलियर्स हो रहे हैं। इससे पहले कि कुछ बड़ी चीज हो, बीच में ही चीजें सॉल्व हो जाती हैं। Hmm. सो यू नो, मतलब एज अ पीएम यू विल नॉट बी ओनली डीलिंग विद द डेव टीम, बट आपके पास और भी लोग होंगे, ठीक है। कि Exactly. जब भी कोई रिक्वायरमेंट आई है, यू नीड टू प्लान इट, वायर फ्रेम करो, यूजर स्टोरी बनाओ, ठीक है। यूजर स्टोरी विल स्टडी इन द सेशन, एंड वंस यू क्रिएटेड द यूजर स्टोरी, आप डिजाइनर से उसको डिजाइन कराओ, फिर अप्रूव कराओ, एंड देन सेंड इट टू डेव टीम। फिर वो डेवलपमेंट होगा, फिर टेस्टिंग होगी, फिर प्रोडक्ट को ले, अगर कोई फीचर अपडेट है तो उसका ए बी टेस्टिंग होता है, धीरे धीरे उसको Hmm. रिलीज करते हैं, and लंबा प्रोसेस जाता है, ठीक है। Exactly. यथार्थ का एक क्वेश्चन है, व्हाई पीपल से इन इंटरव्यू डोंट थ्रो jargons एट मी। Jargons are necessary. Jargons, we talk about just the basic terms that we use in tech, like jargons. अगर इंटरव्यूज में अगर हम लोग बोलेंगे तो लाइक जस्ट इन अ नॉर्मल टर्म, जस्ट वी इंटरैक्ट लाइक ओके, लाइक इंटरव्यूज वो शायद कॉन्सेप्ट यूजुअली तो ऐसे होता होगा ना पुष्प की, हाँ जनरल जब लोगों के इन डेप्थ कम्युनिकेशन। नॉलेज नहीं होती है, एंड दे आर जस्ट यूजिंग दो स्पेसिफिक वर्ड्स, कि आपके पास डेप्थ नहीं है किसी चीज में, बट स्टिल यू आर यूजिंग सर्टेन थिंग्स, सो पीपल लाइक ओके, डोंट जस्ट थ्रो jargons on me and tell me the technicalities and details and all of that. So maybe that is the case यथार्थ, जब ये ऐसा होता है, ठीक है। All right. So since it's 9 p.m., so if you guys have more questions, so we'll take some more questions. Otherwise, we would love to wind up the session. So waiting to see if, क्योंकि थोड़ा सा लैग होता है पुष्प, लोगों को 10-15 सेकंड बाद दिखता है। सो इफ there's anything, just go ahead and ask it. Otherwise, we would love to wind up because पुष्प ने एपीआई से मेरी भूख को और बढ़ा दिया है, और वो एपीआई मेरे दिमाग से जा नहीं रही है, has injected this API thing in my mind. So yeah, I guess we don't have question. संस्कार says dinner में क्या डिनर में क्या होगा? होगा? अभी मुझे भी नहीं पता, ठीक है। एपीआई कॉल करना पड़ेगा। Yes, exactly. ठीक है guys, thank you so much all of you for joining, ठीक है, and thank you so much Pushp, ठीक है, for being there, taking out your time, and यशी कढ़ाई पनीर भेज रही हैं आपके लिए पुष्प, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पुष्प, पनीर आपकी आ गई है, तो ये दिस कुड बी अ गुडीज फ्रॉम साइफर स्कूल्स टीम, ठीक है। So thank you so much, Push. Thank you so much, everyone, for joining. Bye bye. Good night. Have a sweet dream, all of you. And yeah, bye. Thank you, Push. थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।